Hello, my friend, creative lovers. Hope you're fine. Today, I am showing you a very amazing door hanging Christmas decoration. You definitely like. So, stay tuned with me. Must watch my video till the end. Simple and easy recycling material you can easily take from your home. A ring wire, some wooden stick, pine cones, and some artificial flowers, scrap fabric, turn into a magical Christmas decoration, Christmas ornaments. You can easily apply on your upcoming Christmas event and make your home cozy and beautiful. Make stocking, make wreath, and make some flower bouquet from all these ornaments and all these things. Antidote is the way of first step to your home. So make a beautiful entryway. You must like it, and your home transform to a wonderland. If you are new, so please must subscribe my channel, hit the bell icon for more amazing videos, tutorial, DIY, crafting ideas, design. Simplest, easy, but the magic of Christmas. It's called to Christmas when you make it a amazing craft at your on your hand, or you can make it the material already at your home. साउंड में नहीं ले रहा ना। तुम कह रहा यार मेरे साथ कल हाथ कर गया एक बंदा। कहता भाईजान उसने मुझे ना मैंने उसको कहा है, मैंने कहा यार आप मुझे 2 मिनट दे दो, ये कुछ कैश है मेरे पास, बाकी मैं आपको BHR को कहता हूँ, वो अभी आपको ट्रांसफर कर देता है। आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो। पहले देखो मेरे पास से कोई गया कितने का दिया इसने? 26 का। एक्टिव 25,500 और नॉन एक्टिव जो है वो भाईजान आपको 26। बड़ा मैंने जोर लगाया, मैंने कहा चल यार 100 200 ही छोड़ दे। वो पीछे से वो मोटा आ गया। मोटा मोटा वो सफर है, वो जो मोटा है हाँ वो सफर है। वो मुझे बताऊं क्या कहानी डाल रहा है। चेक करना किससे? वो मुझे कहता नहीं जी मैं तो आपको खोल के एक्टिव करके दूंगा। मैंने कहा ये रख लें आप अपने पास। मैंने कहा मैंने तो बिल क्लेम कराने थे भाईजान, मेरा तो एक्टिव जब ये हो जाएगा आपको, जब ओपन करके आप मुझे दे दोगे। ये सामने लगाना। मैंने कहा जी ये तो मुझे ठुक जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, मैं जाने लगा। वो फिर उसने सूखे ने मुझे बुला लिया, कह रहा भाईजान बात सुने आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा यार मैं जानिया से आया हूँ। कहता यार मैं जानिया में, मैं कहा चोर आउटलेट वाले बैठे हुए जानिया में। मैंने कहा वो 2,500 रुपए का दे रहे थे मुझे। मैंने कहा भाईजान मैं जब गया था, कहता उनके तो रेट ज्यादा है। इसका भी कहते ये चोर बैठा हुआ यार, ये पीछे पता नहीं क्या चीज दे रहा है, फिर उगलता वो कहता वो कितने का दे रहे हैं। मैंने कहा यार वो तो मुझे 2,500 रुपए का दे रहे। हाँ ये अभी यार हमारा प्राइमरी टारगेट जो है ना ये वाला बन गया।
अच्छा तभी मुझे जानते हैं। अच्छा ये तभी तभी तो उसने पूछा वो विदेश जा रही है ना God bless you all.